everyone. So today's video is about sentence structures and understanding sentence structures और sentence structures के साथ साथ types of sentences, ठीक है, और उसके अलावा इन सब को समझने से पहले we need to understand as to what a basic sentence is and how is it formed, और उसको भी समझने के लिए हमें थोड़ा सा in depth study करनी पड़ेगी, और sentence formation को समझने के लिए हमें clauses पढ़ने पड़ेंगे, right? So sentence structures को begin करते हैं by first understanding as to what a sentence is. So I'm sure it's very easy. You all must be familiar कि sentence हम बोलते किसको है, ठीक है? So a group of sentences, a group of words or a combination of words that we can use to communicate our ideas is known as a sentence. ये इसकी बहुत basic एक definition है. लेकिन इसमें we need to make sure that एक sentence को बनाने के लिए we need to have a subject, ठीक है, जो action कर रहा होता है. So we need a subject, then we need a predicate. A predicate is the verb or the action जो subject action perform कर रहा होता है. And इसका एक बहुत important feature, एक बहुत important property ये है कि sentence जो है it expresses a complete thought, right? It expresses a complete idea. कभी भी अगर आपका आइडिया इनकम्प्लीट है या वो ना समझ आ रहा हो, दैट मीन्स वो फिर एक प्रॉपर कंप्लीट सेंटेंस नहीं है, उसे आप सेंटेंस नहीं बोल सकते, ठीक है? सो रिमेंबर दैट अ सेंटेंस नीड्स टू हैव अ सब्जेक्ट, इट नीड्स टू हैव अ वर्ब, एंड देन इट शुड बी एबल टू एक्सप्रेस अ कंप्लीट आइडिया एंड अ कंप्लीट थॉट, ठीक है? और सेंटेंस बनता कैसे है? सेंटेंस बनता है विद द हेल्प ऑफ वन और मोर क्लॉजेस, ठीक है? सो एक सेंटेंस का फ्रेगमेंट, उसका चंक, उसका पार्ट है क्लॉज. जैसे अगेन मैं बार बार प्रोटीन की एग्जांपल देती हूँ कि इफ यू ब्रेक डाउन प्रोटीन, सो इट्स मेड ऑफ और इट्स कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स, राइट? सो जैसे अमीनो एसिड्स बनते हैं या H2 है, सो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब मिलता है, ठीक है, या उसके मॉलिक्यूल्स जब उसके एटम्स मिलते हैं तो फिर एक वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, राइट? सो इसी तरह सेंटेंसेस भी क्लॉजेस से बनते हैं. सो clause क्या है? A group of words that contains a subject and a verb, but which is usually only part of a sentence. ठीक है? Again, एक clause में it needs to have a subject, it must have a verb, that means a predicate, and it is usually only part of a sentence. जिसे आप ये भी कह सकते हैं कि अगर एक clause एक complete thought convey कर रहा है, so it's also a sentence. ठीक है? अगर उसमें सब्जेक्ट है जैसे सेंटेंस में होना चाहिए, एक वर्ब है जैसा एक सेंटेंस में होना चाहिए, और अगर एक क्लॉज में भी कंप्लीट थॉट कन्वे हो रहा है, सो वी कैन से कि एक क्लॉज भी एक सेंटेंस हो सकता है. और क्लॉज क्या है? अगेन सेंटेंस का एक पार्ट, एक चंक. We can further divide clauses into two types. So the first type is independent clause and the second one is dependent clause, right? So how many clauses are there? There's just two clauses. There are two types. We have independent and then we have a dependent one. So let's see as to what an independent clause is. Independent clause को हम main clause भी कहते हैं because it's actually the more you can say it's actually the one which is independent and then it's a little more dominant. थोड़ा सा ज़्यादा इसके पास जो है वो आप कह सकते हैं ज़्यादा, like it's more important because I won't say the other one is it's not important or it's unimportant, लेकिन इसका नाम ही ऐसा है क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें like the criteria is actually complete. और वो क्या criteria है? An independent clause is a clause that can stand on its own, ठीक है? It does not need anyone's support. anyone से मुराद any support from any other clause. किसी और clause का इसको support की ज़रूरत नहीं है. It can stand on its own. It's not floating in the air, ठीक है? वो कहीं middle में आपको कहीं float करता हुआ इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट नजर नहीं आएगा, वो एक कंप्लीट थॉट कन्वे करेगा, ठीक है? एंड इट डज नॉट नीड टू बी जॉइंड और लिंक्ड टू एनी अदर क्लॉजेस. दैट्स व्हाट आई जस्ट मेंशन्ड. और एक और बात कि इसमें सारी बातें कंप्लीट हैं, ठीक है? इसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक प्रेडिकेट यानी एक्शन होगा, एक वर्ब होगा, और वो कंप्लीट आइडिया आपको कन्वे कर रहा है. दैट इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, द मेन क्लॉज. इंडिपेंडेंट का मतलब यही है कि जिसको किसी के सहारे की जरूरत नहीं है और वो जो है एक स्ट्रॉन्ग, एक इंडिपेंडेंट एंटिटी के तौर पे चल रहा है, राइट? सो लाइकवाइज एक क्लॉज भी जिसको किसी और क्लॉज के सहारे की जरूरत नहीं है, एंड इट इज कंप्लीट इन इट्स सेंस एंड इट हैज अ सब्जेक्ट, इट हैज अ प्रॉपर वर्ब एंड इट कैन कन्वे कंप्लीट मीनिंग. दैट मीन्स कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है. अब एग्जाम्पल आपके सामने है. Sarah arrived home. Sarah is a subject, arrived is a verb, and an action, and home is actually an object. So ये आपको complete बात समझ में आ रही है. इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपको incomplete लगे या आपको ना समझ आए,
ठीक है? So this is the reason why we call it an independent clause. And how do we identify an independent clause? Let's suppose you read a passage, you read a paragraph, और आपको उसमें से identify करना है कि independent clause कौन सा है. And it's very easy to do it. All you have to do is to find out the subject first. You would see an action or a predicate or a verb along with it, and then इसका जो main feature है वो ये है that it expresses a complete thought. ठीक है? और जो बताया गया, convey किया गया, वो आपको समझ आ रहा है. So ये तीन features हैं through which you can identify कि which one is an independent clause and which one is a dependent clause. So let's move forward a little और हम डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को भी यहाँ पढ़ लेते हैं. सबऑर्डिनेट का मतलब ही ऐसा है कि जो कोई बंदा जो आपके थोड़ा सा लोअर रैंक पे हो, ठीक है, या वो आपके सुपरविजन में काम कर रहा हो, तो हम उसे सबऑर्डिनेट्स कहते हैं. तो डिपेंडेंट क्लॉज क्या है? डिपेंडेंट क्लॉज इज एक्चुअली अ क्लॉज व्हिच इज डिपेंडेंट ऑन एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. दिस इज द रीजन व्हाई वी कॉल इट अ डिपेंडेंट क्लॉज, बिकॉज ये डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट पे, बिकॉज इट कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ओन. इट इज इनकम्प्लीट एंड वो एक कंप्लीट थॉट, एक कंप्लीट आइडिया नहीं दे रहा होता, कन्वे नहीं कर रहा होता, ठीक है. और उसको कंप्लीट करने के लिए यू नीड टू अटैच एन इंडिपेंडेंट क्लॉज विद इट. Also remember one more point, that a dependent clause begins with a subordinating conjunction. एक आपके पास टाइप है coordinating conjunctions की और एक है subordinating conjunctions की, जो मैं अभी आपको example दिखा रही हूँ. So याद रखिएगा that a dependent clause begins with a subordinating conjunction. This is actually one way to identify कि आपका dependent clause कौन सा है. So आपके सामने एक example है, after Sarah arrived home. So after here is the subordinating conjunction, then you see a subject, then you see a verb, but then you don't see as to how this sentence makes a complete, I mean how it's completed. ठीक है, आपको ये चीज नजर नहीं आ रही. आपको ये तो पता है it is a sentence, I mean it is a clause and it has a subject, it has a verb, but it does not convey a complete meaning, right? It seems incomplete. जब सारा घर आई, but then what happened? So now you have to complete it with the help of an independent clause. So आप इसे complete कर सकते हैं. After Sarah arrived home, um, she cooked meal for herself. ठीक है. After Sarah arrived home, um, she slept early. Maybe perhaps आप यूं लिख सकते हैं. So remember कि ये dependent clause में लाजमी आपने साथ में एक independent clause attach करना है ताकि ये complete हो जाए. Now there are, like, you can see some subordinating conjunctions here जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने डिपेंडेंट क्लॉज के साथ, और आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं इनको देखकर कि ये आया कि ये डिपेंडेंट क्लॉज है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है. सो आफ्टर, सिंस, ऑल्दो, सपोजिंग, मीनवाइल, ठीक है, until, how, which, in order to, so even though, although, because, whereas, ये आपके सारे subordinating conjunctions की list है. So next up we have sentence structures, और बकायदा हम सारे types of sentences पढ़ेंगे, लेकिन for now this is just part A and part B would be uploaded soon.